Hello students, welcome to MGM Educations. This is spoken English class. Yes, spoken English class which is necessary for all the students who are graduated or ungraduated, right? So today's class is all about communication. Communication, two types: face-to-face communication and telephonic, or we say it is as direct communication and indirect communication also. One is face-to-face communication and another is communication or talking over the telephone. Am I right? Yes, this is, I am telling you now about the telephonic conversation, right? Talk over telephone. And nowadays this is widely used. Am I right? See, there are steps and there are replies. See, this is a bipolar talk. Here, one speaker, another receiver. Two persons will be there at a distance place and talking will continue then. Here, students, one more thing I want to tell you: talk to known person and talk to unknown person, okay? For known person, the steps and reply will change, and for unknown person, steps and reply will change. But here I am speaking about unknown person, okay? Well, students, are you ready for the class? Let us begin. I will give you the demo. The steps are mine, reply is your. Then you will tell, steps will be your and reply will be mine. Are you ready? If yes, then start. Ready, students? Ready for demo? I am ringing you. Steps are mine, reply is your. Start. Hello. You say hello. Yeah. Is it Hotel Ashok? Reply. Oh yes. Oh, good morning, sir. Reply. Very good morning. Very good morning. Well, sir, have you AC rooms? Oh yes, we have. Have you double bedrooms? Oh yes, we have. Have you all the facilities available in your hotel? Oh yes, of course. Thank you very much. Reply. Welcome. Bye. Goodbye. Reply. Goodbye. So I have already given you just a trial to 3 questions. AC room, other facilities, double bedroom. You can ask many other things. Is there a restaurant or not? Have you restaurant? Etc. etc. You can know that. Okay. So we can change the situation. Now from hotel to we can change the situation to a grocery shop. Suppose you are a grocery shop owner and I come as a customer. I want to buy some items. I want to know whether you have or not. This is question round, asking. So steps will be here like this. No, over telephone this is like this. If it is direct communication, then you will say, good morning, sir. He will reply, oh, very good morning. Yeah. How are you? If known person, how are you? Unknown person also we can say, how are you? He will reply, yeah, I am fine, thank you very much. Sometimes he may also say, I am not so fine, you know. He will say, what you will do? May I help you? You have to say. He will say, oh, no need, please carry on. Then he will continue your talk. You will then ask, ଏଇଟା ଅଛି କି ସେଇଟା ଅଛି କି ବୋଲି କେମିତି ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ ମନେକର ଚିନି ଅଛି କି have you sugar? ସେ କହିବ yes we have. ଚାଉଳ ଅଛି କି have you rice? ସେ କହିବ yes we have. Have you onions? ପିଆଜ ଅଛି କି oh no we don't have. ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି. Have you match box? ଦିଆସିଲି ଅଛି କି? He will say yes we have. एमती गोटे लिस्ट ऑफ आइटम तुम दुकान गला गोटे लिस्ट तैयार कर पिला माने सेमती गोटे लिस्ट तैयार कर दी थो आ गोटे पिला को रोल प्ले मु देबी सी दुकान वाला हम तुम मन जाइए ताको गोटे कस्टमर हिसाब रे रोल प्ले करिवो तुम पचारिवो ओके
सी रिप्लाई दब मु मझे थी ऑब्जर्वेशन करी तुम पचारा ठीक अच्छे कि ना काउंटेबल अनकाउंटेबल हिसाब से तुम तार आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर्स यूज कर कि मन इच्छा कही दौच सीटा ऑब्जर्वेशन करके करेक्शन करदे अभ्यास परिणत हो गला तुमको सीटा मन रही एवं तुमको मुझे शिखेली पिला माने हैव यू ऊपर कॉन्सेप्ट राइट बोले तुम पाखे अच्छी कि आउ जन पाखे कौन अच्छी न अच्छी जदि आम जानापी चाहूँ बा तो केमती पचार राइट एवं पड़ोसा घर को जीव तुमको चीनी लुड़ा पड़ोसा घर को जीव चीनी टी दियो बोल दब कि हाँ आंटी चीनी अच्छी कि ना बोले इंग्लैंड थे तो आम इंग्लीश कथा ही था हेलो आंटी हैव यू सुगर बोली पचार था एवं ये आम ओडिशार अच्छे आ कौन करवा ओडिया का पचार किंतु आमे सुजोग को अपॉर्चुनिटी को यूज करने को पड़ो आम ओडिया कि तेलुगु कहीदे आंटी सुगर ना दा बोली पचार दवा कि मन इंग्लीश भाविदवा अच्छी ओ यहाँ इंग्लीश पचार थे केमती होता हैव यू सुगर सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक पिला माने क्लासरूम रे स्टडी हो ना ये घंटा कर क्लासरूम रे की पाठ हम से विषय को तुम संग्रह कर डे टू डे लाइफ रे अप्लाई कर तेबे जाइए तुम सक्सेस हो पार बुझीपार ना कौन कहली ठीक सेमती घरे आम माँ सहित बापा सहित भाई सहित टे कह आसरे बोलवा जगह प्लीज कम बोली कहीदेले आम बुझुनि कि प्लीज कम प्लीज गो प्लीज सिट प्लीज स्टैंड प्लीज स्लीप सोरे बोला प्लीज ए लाइट बंद करनु स्विच ऑफ द लाइट ले फैन टी लगा तो स्विच ऑन द फैन आम बुझुनि कि इंग्लीश बुझे आम कथा ही पार घरे कहले असुविधा सी कहले ओ बड़ इंग्लीश देखे ये 2 दिन इंग्लीश क्लास स्पोकन इंग्लीश क्लास गला इंग्लीश काटदेला बोलिए एनकरेजमेंट नहीं डिस्करेज करदे यही असुविधा है आमर पतनर मुख्य कारण यहाँ तेणु पिला माने तुम एक्सपोज हुओ नहीं तुम ओडिया का घर कह माँ को तरकारी लुड़ा माग गिव मी मोर करी बोली बोलवाटा को ओडिया का कह तरकारी टे दियो माँ बोल अरे मन रे इंग्लीश भाव दियो प्लीज गिव मी मोर करी एमती भाई कह पानी ग्लास टे आण रे ओडिया का कह ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर मन भर भाव दो तो एमती हेल्ले सीना पाठ हम आ तुम क्लासरूम रे कोचिंग सेंटर रे 5 मास 6 मास जाइए पढ़ देकर पैसा गण देकर बारे पाठ हो नहीं आई एम टेलिंग यू आई एम रनिंग ए बिजनेस आल्सो यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड टेकिंग मनी नो डाउट बट आई एम इंस्ट्रक्टिंग देम टेक द अपॉर्चुनिटीज मेक सेल्फ स्टडी घरे जदि तुमको सुजोग मिलनी तो तुम्हें ओडिया रे कहले भी इंग्लीश रे मन भर सांगे सांगे भाव दियो तुम इंग्लीश हो क्लासरूम रे सक्सेस होवाटा यहाँ बहुत कष्ट किंतु क्लासरूम रु टिप्स नहीं जाए कि घरे यूज करवा पिला बुद्धिमंत यस से बहुत पिला सक्सेस होती बुझीपार हो पिला माने एबे तो तुमको गोटे डेमो देली तुम गोटे रिहर्सल एवं आरंभ कर अरे रमेश तू गोटे काम कलु तू गोटे फ्रूट सेलर हो जा ओके हरीश तू जा रे कस्टमर हिसाब रे तो पचार क्वेश्चन सब हैवी पचार यहाँ अच्छी कि अच्छी फ्रुट्स बोले बोले गोटे 5टा फ्रुट्र ना मन रखी लिखि रखता फ्लावर को जो फ्लावर दुकान को पठेबी फ्लावर 5टा ना मन रखता लिखि रखता वेजिटेबल शॉप को केत पठेबी तत पठेबी रे सुरेश तू से सहित टॉक करू वेजिटेबल्स ना जाक मन रखता ओके बिंजल लेडी फिंगर पोटाटो टमाटो बीटर गार्ड वाटर गार्ड एमती केतटा लिस्ट कर दियो पिला माने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हवा पूर्व तुम पाखे लिस्ट थी अच्छी तुम दरकार पड़े थोड़े देखी कह तापर न देखुन कहबार अभ्यास तुमको मुझे करदेवी ओके बाय।